Welcome back to students. I hope all are good. What are you doing all? Let's start the topic. Topic is economical. Okay, chapter number 3. Okay, chapter number I hope so 3. And economical organization. Okay, chapter name is economical organization. Paper first. Okay, start. Firstly, define the what is economic. Okay. Basic definition: the cross culture study, take a production, distribution, and consumption of goods services. Economics not be the confused with the technology. Technology involves the technique, example, cultivation, house construction, and others. Okay. So firstly, explain what is production. Okay. How people organize their work. ठीक है, कैसे लोग अपना वर्क ऑर्गेनाइज करते हैं. प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिवाइडेड लेबर बाय द जेंडर और एज. दो चीजों में डिवाइडेड है सोसाइटी, एक तो जेंडर और एक एज में. पार्ट टाइम स्पेशलाइजेशन, फुल टाइम इन द एग्रीकल्चर स्टेट. इन इंडिविजुअल सोसाइटी डिटेल लेबर स्प्लिट इनटू द सब पार्ट. Okay, and what is distribution? There are three types predominant: redistribution, market exchange, ठीक है, and reciprocity. Action often is embedded in the society. Trade is a part of the political. Okay. However, the power is derived from the elaborate state of the exchange. And conceptions क्या होते हैं कि access to the good source and the services related for their property. ठीक है, property से relate कर सकते हैं. Where such as rule exist is the example of conception labeling the mechanism in the system. जैसे ये दिखाया हुआ है आपको पिक्चर में. ठीक है, involve some wealth labeling and also community control over the surplus wealth. ठीक है, कुछ overview है. Infinity of the human wants, limits of the means to justify them, source of this formality debates, relation of the production including the property, system of exchange are the three kind of the reciprocity plus redistribution and market exchange. The embedding of the economy in society. ठीक है, economy as an instituted process. इन द ये क्या चीज है, एक तो वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न सोसाइटी से रिलेट करती है. ह्यूमन वांट आर द कंसिडर इन्फिनिटी, मीन्स ऑफ द सेटिस्फाइंग देम आर इन्फिनाइट. एग्जांपल, कार्स फ्रॉम देम. Robin defined for the economy the science which study the human behavior as a relationship between and scale means that have alternative uses. ठीक है, किसके बीच के रिलेशनशिप है? ह्यूमंस, ह्यूमन बिहेवियर एंड किसके बीच में रिलेशन करते हैं? एंड्स एंड द कायरेस. ओके, इनके बीच का ये रिलेशनशिप है. ठीक है, आर द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ फ्री गुड्स दैट एग्जिस्ट इन द प्लेंटीफुल सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कह सकते हैं कि एयर इफ इज डू नॉट माइंड द पॉल्यूटेड. इकोनॉमिकल गुड क्या है? दोज दैट आर द स्केल. सेकेंड सेंस ऑफ द इकोनॉमी इज इकोनॉमिजाइंग एंड हाउ डू यू बेस्ट यूज व्हाट इज स्केल. ये दो चीज में आपको यहाँ पे डिफरेंस बोल सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करा जाएगा. एक फॉर्मलाइज्म एंड द एक सबस्क्रिप्ट. कल्चर का वर्क, कल्चर रिलेटिव्स ऑफ द इकोनॉमी. It's not a universal. Good and services, how good and services are produced and distributed depend upon the society study. Formalized society, state is everywhere, maybe intangible things such as prestige, time to infinite, even if your other things are not. सब में क्या है? Precious of the good and services. ठीक है, मेन वर्क तो गुड एंड सर्विसेज का है. डिफाइन द थ्री मोड ऑफ एक्सचेंजेस. तीन टाइप के एक्सचेंजेस प्रेजेंट है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. रेसिप्रोकल, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट ट्रांजेक्शन. ठीक है, तीन टाइप के मेजर मॉडल्स हैं. मेजर मॉडल्स है किस चीज के? मोड ऑफ एक्सचेंज के. ठीक है, आर्ग्यू द पॉजिटिव डज नॉट अप्लाई एनीवेयर. इकोनॉमी इज ए इन्फिनाइट या इंस्टीट्यूटेड प्रोसेस. फॉर्मुलाइज क्या है? रॉबिन जो है एक क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक्स
optimizing end with the limited means. Economic occur in non-economic exit. Political is the safe, distinct, uncertain ones. Study time is a major course and क्रॉस कल्चरली प्रेस्टीज केयर, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। ये एक छोटा सा मैंने आपको एक क्या बोल एडवर्टाइजमेंट टाइप का है। मार्केट, एकेडमिक मार्केट, द एकेडमिक मार्केट समरी है। आउटसाइड विंडो गेट्स द डीन रिक्लेट द फैसिलिटीज, ठीक है। आई एम ए PhD. I do not expect the attention brusquely this and this is 2 year contract with a media call in 3 months. Any other candidates over here? I will work for a food. ये पूरा आपका एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट टाइप का। रिलेशन क्या है प्रोडक्शन के साथ? प्रोडक्शन ऑफ रिलेशन या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। Arrangement, production of goods and services involves several variables. Properties, those this way such a things as a ownership. If so, how exercise ownership? What right are includes and labor relation? What does want? Who does they want? Property का joint and communication से क्या है? Communication is a ownership by the community. Property is a freely accessible to the all, or it involves the sharing arrangement meet among the this. Ownership, private use as a right. Joint property क्या होता है? All share in the right, ठीक है, and obligation. Property held by the member of a corporate lineage or camp. Example, cattle ownership among some East African. Analysis क्या कर सकते हैं आप कि corporate legends। अब ग्रुप्स में क्या था? फर्स्टली आपने जॉइंट प्रॉपर्टी को पढ़ा, ठीक है। देन आपके पास क्या है? डिसेंट ग्रुप है या कॉर्पोरेट ग्रुप है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज्ड है बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जैसे लैंड, कैटल, फिशिंग, हंटिंग ग्राउंड, मे बी ओनर्ड बाय ए ग्रुप और ओनर्ड बाय द फैमिलीज, या तो किसी ग्रुप से या किसी फैमिली से ओनर्ड है। डिसेंट ग्रुप एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन, स्टेट एंटिल राइट एंड ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हैं आप? राइट टू कैटल फ्रॉम द वाइट वेल्थ, ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ए कैटल फॉर द वाइट वेल्थ, ऑब्लिगेशन टू डिफाइन, ठीक है, डिफेंड एट वन लॉस इज हर्ट ड्यू टू द डिजीज, अनदर कॉन्ट्रीब्यूट रिप्लेसमेंट ऑफ हर, ठीक है। डिसेंट ग्रुप क्या है? द लाइनेज ऑन द क्लैम इज सोशल सेंट्रिक, it outlives the lifespan of the individual, not unlike corporation and downsizing. Ecocentric, ठीक है, egocentric होते हैं। Comprise full birth and the sister, full brother and the sister, overlap with their kinard. So when full siblings die या सिबलिंग्स डाई कर जाए, किंडर जो वो डाई कर जाए, ठीक है। लीगल पर्सन क्या है? एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में भी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है? एंड इकोनॉमिकल एंड डिवीजन ऑफ लेबर में जो हमारे मेनली जा किस चीज में डिवीजन किया जाता है? जेंडर और एज में। फिर क्राफ्ट एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। ग्लोबलाइज डिवीजन ऑफ द लेबर, एक्सचेंज रिलेशन, एक्सचेंज रिलेशन का बैकग्राउंड, ऑब्लिगेशन ऑफ द गिफ्ट, ठीक है, जनरल बैलेंस्ड, नेगेटिव क्या है? एंड बिग मैन कॉम्प्लेक्स एंड लिमिट्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन, सोशलाइज मॉडल एंड मार्केट एक्सचेंज एंड मार्केट एक्सचेंज। फिर मार्केट एक्सचेंज का एक्टर्स क्या क्या है? रिलीजन, कल्ट, बैंड, मार्केट। देन उसका लास्ट कंक्लूजन, ठीक है। ये सारी आपके इसमें आएंगे। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है,
Legal person, corporation defined as a legal person similar to the decent group. Murder of the noble, one claim by the commoner to another. Require death of the noble of the commoner claim. ठीक है. Responsibility there by the collective. Murder require revenge regardless of the individual knew. ठीक है. Private property and property private कुछ भी बोल सकते हैं. It can be used one own and community or the public restriction apply. Only need a permit to make a renovation. ठीक है. Then there that is the recent news क्या है. House are being taken over by the private corporation. ठीक है. Private property, economical state in the economical countries owned most productive assets. Upper left is Chinese. Only remaining countries like Cuba and Korea. ठीक है. Land mostly belong to the empire. ठीक है. एंड लेबर टैक्स वाज मोटर ऑफ द इकोनॉमी या लोअर लेफ्ट. ठीक है. ये देखिए. Division of the labor, the gender and the age. Definition is assessment of the task based on the societal rule or the norm. Among horticulture and division is assigned by the gender. Women do some tasks, men other. ठीक है. Age में क्या है? Youth do more tasks than the aged. The aged bring experience to the each task. Part time specialized क्या है? Weaving हो गया. But all handle job in the primary sector was cultivating. Division of the labor is a craft, specialization and detailed labor with intensive cultivation. More denote full time to the specialized craft. Knowledge extended to all aspects of the given craft. Some may specialize by the region. Industrialization, which is more efficient in the pin production. One man cutting wire and putting pin and putting head on it, whitening it and papering it, or 5 man, one of each task. Okay. Division of labor, industrialized production system क्या है? Detailed labor involve breaking each task down. ठीक है. To its subtask in the production, assigning each task to each individual and ordering each individual how to do each subtask. ठीक है. 5 people each specializing in one of the 5 steps. You can 10 units in the same time. One person doing all 5 requirement steps in manufacturing a product can make a 1 unit. Globalized division of the labor is able globalization of the production. Labor intensive task set is a third world. ठीक है. Such is leather working of operation is a endure. Wait बच्चों. ठीक है. Such as these leather working operation result क्या है? Downsizing and the plant closure. Mexican as a low wage in China, Bangladesh draw the factory there. Distribution and exchange relation. Once produced goods and services must be distributed. Three-way by which goods are distributed. Reciprocity, redistribution and market exchange जो मैं आपको इतनी देर से explain कर रही हूँ. डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इसका आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है उन लोगों से. रीडिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो ऑफ द गुड एंड सर्विसेज इज सेंट्रल अथॉरिटी एंड दे रिटर्न इन डिफरेंट फॉर्म. एंड मार्केट एक्सचेंज बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म. ठीक है. खरीदा बेचा एक प्राइस मैकेनिज्म है, उसके बेसिस पे आपने चीजें ली और बेची.
Preference when the two group of the man meet they way more away, or in the case of mistrust they may resort to the arm, or as they may come to the term. Coming to the term is called as a total and any obligation that has the force of the law in the absence of the law. Okay. Obligation to the gift to extend the social tie to the another person or another group. Obligation to receive, to accept the relationship. Refusal is a rejection to the offered relationship. Induce the hostility and obligation to repay, and failure to repay वन से बिगर. टाइप्स क्या है? एक तो जनरलाइज्ड हो गया, बैलेंस हो गया, नेगेटिव हो गया. ये तीन मेन चीज तो इसके अंदर है ही आपके ऑब्लिगेशन में या टाइप ऑफ रेसिप्रोकलिटी में. द ऑब्लिगेशन ऑफ अंडरलाइन द प्रिंसिपल दिस डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. जनरलाइज में क्या है? ट्रांजेक्शन इन विच गिफ्ट आर फ्रीली गिवन विदाउट कैलकुलेटिंग वैल्यू एंड रीपेमेंट ड्यू. जब भी किसी को गिफ्ट दिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी वैल्यू को रिकैलकुलेट करो, कि वैल्यू पता करो कि कितने की गिफ्ट होगी, या उसके बाद उसका रीपेमेंट करो. ठीक है. एग्जाम्पल मीट डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग. एग्जाम्पल फैमिली पूलिंग ऑफ द सोर्सेज इवन द बर्थडे रिप्रेजेंट. ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है. ये ऊपर वाला एग्जाम्पल था. Usually occurs among the close kin. एंड द बैलेंस क्या है? बैलेंस इज पॉट डायरेक्ट एक्सचेंज, आपका डायरेक्ट वर्क चल रहा है. वैल्यू इज गिफ्ट इज कैलकुलेटेड. टाइम ऑफ रीपेमेंट इज स्पेसिफाइड. सेलिंग फूड, यहाँ पे देखिए फूड बेचा जा रहा है. वन टेंडर गिव ए पार्टनर टू व्हाइट आर्म ब्रेड. सी द मैप. Expect a red necklace of the equal values in the return. Gifts are made until the return occur. Usually occur among the distant kin. अब ये था आपका एक तो बैलेंस फॉर्म में, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में. अब हर चीज के कुछ नेगेटिव फॉर्म्स भी होते हैं. एन एक्सचेंज, एक सेकंड, अरे व्हाट आर यू हैपेंड, व्हाट Negative में an exchange where one party try to get the better of the exchange from the another party. एक पार्टी ट्राई करती है कि वो दूसरी पार्टी से ज्यादा अच्छा कर सके, जैसे हार्ड बार्गेनिंग. ठीक है. हॉर्स रेट. सेलिंग प्रिपेयर फूड इनटू द कैपिटल मार्केट, किसी कैपिटल मार्केट में फूड बेचना, या बार्गेनिंग में बहुत अच्छे होना. यूजली यूजली अकर अमंग द अनरिलेटेड पर्सन. वेरिएशन इज अ साइलेंट ट्रेड. केस स्टडी. जस्ट वेट, जस्ट चेक कैमरा. Case study and big man complex. Big men are the headmen, which are the following: created by during a favor. Favor is a different to repay. Individually exchanges responsibility. Collectively is the appearance of the redistribution. Big man power की कुछ limits होती है. Cannot enforce the obligation. Subject to this to the other big man. Exchange fees of every 10 years with a big man equal in the status. Redistribution process whereby goods and the services follow to a central authority where they are the sorted, counted and recalculated. Classic example, historical example is administrative trade. Redistribution and socialized model, central feature of economic economy. Ethnographic example is IKEA labor tax, where man turn the soil with a foot pole, where the women break up their goods. For modern example is country student from the across Latin America at the Cuban medical school. Market exchange of goods among many buyers and the seller. आप अपनी चीजें जो हैं वो बेच सके, दे सके बायर्स को, जिन्हें लेना है या जिनको सेल करना है उनको आप सेल करेंगे. वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एग्जांपल मार्केट इन नाइजीरिया एंड मार्केट. ये देखो, ये दोनों मार्केट्स हैं. यहाँ पे लोग अपना सामान, जो भी अपना प्रोडक्ट है वो उसको सेल कर रहे हैं. मार्केट इंक्लूड द क्राउड ऑफ द बायर एंड द सेलर. इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन द
प्राइस एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट एंट्री एंड एग्जिट। आपके पास मार्केट में एंट्री करने का एग्जिट करने का एक फ्रीडम होता है। मार्केट एक्सचेंज एक्टर supplier who to the sale that directly proportional to the price increase, purchaser who buy is a directly proportion to the price decrease, and interaction led to the price equilibrium no profit। ठीक है, पहले सप्लायर में क्या है कि वो सेल करेगा डायरेक्टली proportional to the price increase, purchaser who buy it demand or directly proportional to the price increase, price decrease। ठीक है, एग्जाम्पल रीजनल मार्केट्स, केस स्टडी, entry seller may pay small taxes, buyer may unknown, many buyers and the sellers। ठीक है, price is a constant topic of the conservation, profit is a minimal, regional specialization from the guaranteed buyer for their product। okay, conclusion क्या है, economy entails redistribution of goods and the services, still economies embedded in the society, big man complex involve the politics, maintain the power, this, and cooler ring is the most embedded in the prestige, and interconnection will be seen in other topics, social work and the politics। ठीक है, ये चीज यहाँ पे खत्म होती है, बट ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये टॉपिक अभी आपका और स्टार्ट रहेगा, जस्ट वेट 2 मिनट। जो इकोनॉमिकल सिस्टम है इन द वर्ल्ड टुडे इंक्लूड द सब्सिडेंट मॉडल, कैपिटलिज्म, ठीक है, प्लान इकोनॉमी एंड मिक्स्ड मॉडल। ऑल दिस सिस्टम नीड हेल्प, all these systems help people need and the desire in different way। Our planet resources are limited and economical exploitation can be led to overuse of resources and the creation of excessive amount of waste। After future generation should work on this problem or we will not enough natural resources। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी इसके पास जो एक प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसी टाइम पे हम उन लोगों को इतना स्पॉइल कर रहे हैं, इतना खराब कर रहे हैं, इतना ओवर यूज कर रहे हैं उनका, कि बाद की जो जनरेशन है उनके पास वो चीजें नहीं बचेगी। वी मस्ट we must all work together to consume the earth resources responsibilities। ठीक है, हाउ इकोनॉमिकल एक्टिविटी वर्क, पीपल हैव इंडिविजुअल नीड सच ए फूड, उनको फूड की, क्लोथ की, हाइजीन की, एक्सरसाइज की जरूरत है। वे सोसाइटी एज ए कलेक्टिव नीड्स जैसे हेल्थ केयर, जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। एंड व्हाट इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी डिस्क्राइब ऑल द जॉब डन बाय द वर्कर्स, जितना भी जॉब है वो वर्कर्स के थ्रू होना, in order to satisfy the need of the people and society by providing good or the services। The three phases of the economical activity, first is production, second is distribution, ठीक है, and third is consumption। ठीक है, तो फर्स्ट इज ए प्रोडक्शन, द कंपनी डिसाइड ऑन द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, किसी भी कंपनी जो डिसाइड करती है अपने कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए, द अमाउंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, द प्रोडक्ट कैन बी, उस प्रोडक्ट को हम या तो गुड भी बोल सकते हैं, सर्विसेज भी बोलते हैं। गुड में इज कंज्यूमर गुड्स विच सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ नीड of the consumer, जैसे cloth and manufacture। Intermediate goods such as machine and tools are used to the manufacture consumer goods। Services, healthcare, public transport, police, etc. They require infrastructure and the investment of the government। डिस्ट्रीब्यूशन अकर आफ्टर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड एंड द सर्विसेज टू द कंज्यूमर, वो जो भी अपने चीजें प्रोडक्ट फॉर्म किया है, जो प्रोडक्शन वर्क किया है, ठीक है, उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो। This involves the storage, transport, marketing and sale of goods। There are the two steps in the sale process, पहला wholesale and second is retailer। Wholesalers buy a large number of product। Wholesaler जो होता है वो बहुत ज्यादा large number में आपका सामान purchase करता है from their company। ठीक है, retailer क्या है, retailer business, रिटेलर बिजनेस बाय स्मॉल नंबर ऑफ गुड्स, वो बहुत छोटे अमाउंट में जो है वो रीसेलर से परचेज करता है एंड सेल देम डायरेक्टली टू द पब्लिक इन द शॉप। ठीक है,
होलसेलर जिससे सीधा कंपनी से परचेज करता है, रिटेलर जो होते हैं वो होलसेलर से परचेज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अमेजोन। उसने कहीं से लिया एंड देन उसने किसी और को दिया कि वो आपको दे के आए। ठीक है, अमेजोन टेस्टिंग ए ड्रोन। Consumption, the buying of goods and services, allow the people to satisfy their needs. This means they are able to consume the product of or use the good and services. People consume goods such as food, water, drink, and use others such as television or the computer. The factor that affect the प्रोडक्शन, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज है, लेबर है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं natural give as an element that is transferred to satisfy the need of human society because these resources are limited and could run out soon. So we need to make sure we do not overexploit them. Labor is all human activity, whether the physical or intellectual, that is required to produce a good or the provide the services that are necessary for people and the society. ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट इन द सेंस जो इंट्रो पार्ट है वो मैंने आपको दोनों वेज में समझा दिया, एक एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटेड भी और एक नॉर्मल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड भी। सॉरी। Capital includes all the resources used to produce a good and services. These are the two types. First is a physical and second is a financial. Physical that include the Physical, they include the land on which the business is built and the construction and maintenance of the premises and the machinery and the raw material needed for the production of goods and services all require consider the investment. ठीक है, ये समझ में आ गया, easy है। And financial में money needed to bring the production and induce the loan of the bank of other institution. Technologies make it possible to the design, construction and use of machine. Obviously, टेक्नोलॉजी की यूज से ही आपकी जो मशीन्स हैं उनका मेनली वर्क स्टार्ट होता है। डिवाइस फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड गुड सर्विसेज। थ्री टाइप्स में प्रोडक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, मैनुअल, मैकेनिकल एंड हाईटेक। Competitively, companies require the quality training program for the employee क्योंकि कंपनी करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो लेबोरेटरीज टू रीच ए न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू प्रोडक्ट, जिससे वो ऐसी लैब्स भी होती है जिससे वो एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई मशीनरी के बारे में और नई टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जान सके। The economical sector also adverse. They have been traditionally divided into three large economical sector. One is primary, secondary, tertiary and quaternary. चार में divided हो गया। Primary is a exact, secondary is a manufacture and refine, third tertiary is a service distribution. तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? द इंक्लूड activity that produce food and for consumption of raw material from the industry. It consists of the agriculture हुआ, livestock farming हुई, fishing हुई, forestry हो गई वो। सेकेंड सेक्टर में क्या जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में द सेक्टर includes all economical activity that transform raw material found in nature through the industrial processes with the manufactured product. Activity क्या? Industry, construction, exploitation of the energy resources जैसे water, oil, gas. Tertiary sectors are the sector include a wide variety of the activity. It does not produce a material goods like a primary and secondary sector. It produce it produce services to the production or to do companies such as healthcare हो गया, education हो गया, transport, tourism and trade and culture. This sector is the fastest growing sector, ठीक है, due to the appearance and expressions of the informative society, which has aided the development of scientific and technical research, including on service and shops. The quaternary sector, this is a new economical sector based on the expertise that include the activity related to creation, distribution,
manipulation of the information, and also the social and culture, economical innovation and research. Workers in this field need a special training and high level of expertise. Economical system, all society need to think about what product they have we make and how they make them, and how will we will make them. For this system can be organized in different way according to the society brief and the historical development. The system is characteristics of the society with a low level of development. Produce a People produce what they need to meet the basic need. They worker the land for the food, build their own house, make their own clothes and goods. The capital system, the capitalized system क्या है? ये system है defined from the free competition बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कंपनी. कंपनी और इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन है कि वो डेवलप करे इकोनॉमिकल एक्टिविटी को. इट आल्सो कॉल्ड ए फ्री मार्केट सिस्टम. इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर फेयर प्राइसेस फॉर गुड एंड सर्विसेज दैट पीपल नीड. दिस इज मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट. Capitalism started with the Industrial Revolution in the late 18th century. Planned economy क्या होती है? In the system, the state owns the means of the production and control all aspects of the economy. It decide how much is produced. It also decide how much goods will cost and what to do with the profit. Today, this system exists in the country like China or North Korea. China, however, is changing the slowly by opening its economy to foreign country and investment. Alternative economies क्या होती है? These economy reject capitalism say because they say it does not meet the real need of and promote the inequality. They suggest the unique model of society based on this between the people respect from the nature and the common good. Environment, society, economy, ecological ये सब जो है तीनों जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, तो गाइस ये आपका इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो इंट्रो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट करा दिया आज की क्लास में आपको. ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई इश्यूज हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड मेरी आप लोगों से प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करें. लोग व्यूज़ करते हैं बट लाइक्स नहीं करते. प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जितना भी हो सकता है. आई नो आप लोग रमा मैम के वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं, आई रियली नो. ठीक है, बट स्टिल आप मेरे भी कोई इतना बुरा पढ़ाया हुआ नहीं होता है. ठीक है, बट आपके टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि मैं उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती. तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस को भी उतना ही पसंद करें जितना आप रमा मैम की वीडियोस को पसंद करते हैं. प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को भी लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें. आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और मेरा पढ़ाया शायद आपको समझ में आता होगा. तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं मैम हमें ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, तो प्लीज़ आप मेरे को बता सकते हैं. मैं उस तरह भी आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, बट उसके लिए आपको भी मेरी वीडियो पूरी देख के मुझे बताना पड़ेगा कि मैम हमें क्या चेंजेस आप में चाहिए, या हमारे क्या चेंजेस आपकी पढ़ाई में हमें चाहिए, या हमें नोट्स में क्या चेंजेस चाहिए. अगर कुछ भी ऐसा है तो प्लीज़ आप मेरे को एक्सप्लेन करें, मेरे को बताएं जिससे मैं आगे चीज़ें चेंज कर सकूँ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस सेशन, दिस लेक्चर एंड दिस क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ. टॉपिक वही होगा ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ. चैप्टर अभी आपका वही चलेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 डेज तक वही चैप्टर चलेगा. ठीक है, बाकी मोस्टली आपकी चीज़ें कंप्लीट होती जा रही हैं धीरे धीरे. ठीक है, ट्राई कि मैं आती हूँ लाइव किसी टाइम पे क्वेश्चन पेपर्स के साथ, बट किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है क्वेश्चन पेपर्स के लाइव सेशन के लिए, इसलिए मैं भी कोई एफर्ट्स नहीं डाल रही. बट अगर ऐसा नहीं चलता रहेगा तो एक दिन मेरे को बिना किसी के रिप्लाई के, बिना किसी के कमेंट के कि मैम आप आइए, मैं ऐसे रैंडमली किसी भी दिन जो है आ जाऊंगी आपके लिए लाइव सेशन पे. ठीक है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चीज़ें पढ़ें, और अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जब मर्जी चाहें तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें, और मैंने अपना नंबर भी दे रखा है बहुत क्लासों में. अगर तब भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय एंड टेक